Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video lecture, we are going to discuss the concept of rate of change. There are two types of the concept of rate of change. The first one is average rate of change, and the second one is instantaneous rate of the change. Okay, so average rate of change is actually the slope of a secant line which gives the average rate of change in a phenomena, and that is always approximate rate of change in the phenomena. So average rate of change is the slope of secant line, and the instantaneous rate of change is the slope of a tangent line at a particular point. Instantaneous rate of change is the slope of tangent line, which is called derivative. Okay, so first of all, we will discuss the average rate of change in a phenomena, and then we will discuss the instantaneous rate of change in a phenomena, which is called derivative. Okay, in this course we are discussing single variable functions. It means that the independent variable of a function will be a single variable. You see that x is your independent variable, and this function f only depends on independent variable x. So from here we conclude that in this course we are discussing that one quantity will depend on another quantity. It may be possible that one quantity depends on so many other quantities, but this course is related to single variable, so that's why we always consider two quantities in which one quantity is independent, one quantity is treated as independent quantity, and which is called input, and the other quantity is considered as dependent, which is called output. So first of all, we will discuss the independent and dependent variable, how you will differentiate between dependent and independent variable. If I consider a real life situation in which one numerical quantity depends on another numerical quantity, for example, first we are going to distinguish between dependent and independent quantities. Distinguish between dependent and independent variables. So if I consider a real world problem, a real life situation in which a person in business wants to know how profit that is the output or dependent variable changes with respect to advertising or advertisement. So the advertising is your input, that is independent variable. So here you clearly see that profit will depend on the advertisement. If you change your advertisement, automatically the profit will change. So you clearly see that this profit depends on the number of advertisement.
So remember, when you change your input, the output will be vary. So in this situation, you see that one quantity is dependent on another quantity, and that is the profit and advertisement. So that is the difference between dependent and independent. Whenever you change the independent variable, the dependent variable will be changed, mean the values. We are writing y is equal to f of x. So if we change the value of x, automatically the value of the y will varies. So that is the difference between dependent and independent. If you consider another example, that is a person in medicines want to know how a patient reaction to a drug. A patient reaction to a drug, that is your output, changes with respect to dose. If you take dose, so what will be the reaction to the drugs in the patient? So in this case, reaction to a drug in a patient, that is your output, which is a dependent variable, and the number of dose that the patient takes is your input, that is your independent variable. यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप अगर अपनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को चेंज करोगे तो आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा या कम करेंगे तो उसके मुताबिक प्रॉफिट आपके पास वेरी होगा। तो एडवर्टाइजमेंट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम इनपुट कहते हैं फंक्शन में, और प्रॉफिट आपके पास आउटपुट है जो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और ये हमेशा आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज से ये आपका प्रॉफिट तब चेंज होगा। सिमिलरली, अगर आप रिएक्शन टू अ ड्रग ले लें जो आपके पास आउटपुट है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इट डिपेंड्स ऑन द डोज आपके पास इनपुट, पेशेंट कितना डोज लेता है उसके मुताबिक उसकी पेशेंट की बॉडी में रिएक्शन टू अ ड्रग वो चेंज होगा। सो दैट इज़ output and that is input. Output mean dependent variable and input is independent variable. So in mathematics we write y is equal to f of x. X is par independent variable and y is par dependent variable. X is independent and y is dependent. So when you plug x, the function f operates on that x and gives the value of y. So for each x we must have a unique y. That is the definition of the function that we discussed earlier. So remember, आपके पास जो इनपुट होते हैं वो आपके पास जब आप वेरी उसको करोगे तो आपके आउटपुट्स वेरी होंगे. So from that we conclude that the change in dependent variable requires the definite change in independent variable through a definite rule which is called a function. So whenever you need to change your output, for example, you are interested to increase your profit. So how the profit will increase? You need to change your advertisement, you need to increase advertisement. So on the basis of that change which you make in the independent variable, that change will change the output which is called dependent variable. So that is the important point. Note that the change in dependent variable requires the definite change in independent वेरिएबल. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आपका एक क्वांटिटी जो
डिपेंडेंट है वो तब चेंज होगा जब आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आप चेंज करें। जिस तरह आप एडवर्टाइजमेंट को चेंज करेंगे तो प्रॉफिट उसके साथ चेंज होगा। आप डोज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होगा या जो ब्लड के अंदर डिज़ाल्व होगा वो डोज, वो मेडिसिन्स, तो वो आपके पास बॉडी को या ड्रग के लिहाज से जो रिएक्शन आएगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर आप चेंज लेके आना चाहते हैं तो आपने अपने इंडिपेंडेंट को चेंज करना होगा। Now coming over to that is the difference between the dependent and independent variable. इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अगर अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ले आना चाहते हैं तो आप अपने इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट which you write in note we will define derivative. Okay, the concept of the average rate of change. So first of all we are discussing the average rate of change. Okay, average rate of change. For example, a car accelerates from point A and here the time is 0, mean the car is standing here at rest position, and here the velocity is, let's say that is t naught 0, v naught is also 0, and the car accelerates from here and moves to point B, and at that point the time is 8 seconds, mean the car takes 8 seconds to reach the point B, and here the velocity, let's say that is v1, that velocity is equal to 96 kilometer per hour. So what will be the average rate of change of the car along this path from point A to point B? So that is called the average rate of change. So you see that velocity depends on the time. So here the independent variable is time, and the dependent variable is velocity. So the change in time that will be calculated by taking the difference of t1 minus t naught. So that is 8 minus 0 second, which is equal to 8 second, because it starts from the rest position, time is 0, and then the car reach to point B, the time the car reach to point B is 8 second. So that is the change in the time, and the change in velocity, at point A the velocity is 0 and at point B the velocity is 96 kilometer per hour. So v1 minus v naught, so that will be 96 minus 0 mean 96 kilometer per hour. So you see that the change in time is 8 seconds and the change in velocity is 96 kilometer per hour. So what will be the average rate of change? So the definition of the average rate of change is average rate of change in a phenomena. So that is actually change in dependent variable divided by change in independent variable. जो change डिपेंडेंट वेरिएबल में आया है उसको आपने डिवाइड करना है चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फ्रॉम दैट यू विल गेट द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन अ फिनोमेना. सो द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज 96 and the change in independent variable is 8. So from there you get 12 kilometer per hour. So that is the average rate of change from point A to point B. The average rate of change in the velocity is
12 kilometer per hour. Mean if you consider any point, the velocity at that point will be 12 kilometer per hour. Here the velocity will be 12 kilometer per hour, here the velocity will be 12 kilometer per hour. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट के ऊपर 12 किलोमीटर पर हावर ही हो, बट दैट इज़ द एवरेज. सो रिमेंबर, एवरेज रेट ऑफ चेंज always gives the approximate rate of change in the phenomena. So average rate of change mean approximate rate of change in the phenomena. Approximate rate of change in the phenomena. Now we will consider a function. For example, I am considering a function in plane. Let's say we have this function, that is y is equal to f of x. That is a function. Okay, so if I consider x in the domain of the function, that is x, so on this x the function will gives you y, mean f of x, and let's say this point is denoted by p, which is x f of x. तो जिस तरह मैंने आप लोग को कहा था कि जब आप अपनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के अंदर चेंज लेके आओगे तो तब आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी चेंज होगा. तो आपका इंडिपेंडेंट हमारे पास x है, इसको हम चेंज करते हैं, इसके साथ हम डेल्टा x, देखिए दैट इज़ द चेंज. आपने इसके साथ ये चेंज इसको लेके, लेट से अगर ये आपका 2 है और आप यहाँ 4 तक आ गए हैं तो 2 आपने इसमें चेंज लेके आए हैं. सो दैट इज़ x प्लस डेल्टा x, दैट इज़ डेल्टा x. यू चेंज यूर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय डेल्टा x. तो जब आपने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया तो उसके मुताबिक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो भी चेंज होगा, और ये आपके पास होगा दैट विल बी f of x plus delta x, which can be written as y plus delta y. So आप देख सकते हैं, let's say that is point q and the coordinate of this point will be x plus delta x, f of x plus delta x. यहाँ आप देख सकते हैं जब आपने अपने इंडिपेंडेंट में इतना चेंज लेके आए हो डेल्टा x, तो आपके डिपेंडेंट में जो चेंज आया है वो है डेल्टा y, बिकॉज दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट y from y plus delta y, you will get delta y, and from here we conclude that delta y will be f of x plus delta x minus f of x. That is final minus initial. Okay, तो जब आप अपने independent variable में, that is the change in independent variable, आपने जब आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डेल्टा एक्स चेंज लेके आए हो तो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल जो हम y होता है और जो हम y एक्सिस के अलांग मतलब वर्टिकल के अलांग ड्रा करते हैं तो उसमें आपके पास ये चेंज आया है. दैट इज़ द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल. सो अब हम इस चेंज में इंटरेस्टेड हैं, हम फिनोमेना के अंदर जो चेंज आता है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं. हम ना ये इसमें इंटरेस्टेड तो नहीं होते कि हमारे पास यहाँ कितना डिपेंडेंट में, जब हम इंडिपेंडेंट में जब हम चेंज लेके आते हैं तो उसके मुताबिक चेंज आता है डिपेंडेंट पे. इंडिपेंडेंट में जब चेंज लेके आते हैं तो उसके मुताबिक चेंज आता है इंडिपेंडेंट पे. और आपके पास आप इस पॉइंट से अपनी फंक्शन के ऊपर इस पॉइंट तक आप मूव करते हैं तो यहाँ कितना चेंज आया है, फंक्शन में कितना चेंज आया है, वो चेंज अगर आपने फाइंड मीन पॉइंट फी से आप पॉइंट क्यों पर गए हो, तो वो चेंज अगर आपने फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज कहलाएगा. और वो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा वाई बाय delta x. That is change in dependent variable and that is change in independent variable. और वो हमारे पास क्या होगा, change in dependent variable is this f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, and that is the change in independent variable.
But actually, if you see to this, that is the slope of secant line. Slope of secant line, a line which passes from the from the 2 points of the given curve. Such lines are called secant line. So अगर मैं इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करूं, दैट इज़ अ लाइन, ये लाइन आप देख सकते हैं, तो ये कहलाएगी secant लाइन, दैट इज़ अ secant लाइन। तो आप इस कर्व को इस लाइन से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। इफ़ यू आर फाइंडिंग द एवरेज रेट ऑफ चेंज, सो एवरेज रेट ऑफ चेंज असल में फाइनल माइनस इनिशियल से आपको चेंज इन डिपेंडेंट और फाइनल माइनस इनिशियल से आपको चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इस कर्व को इस स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑलवेज गिव्स द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज इन द फिनोमेना। स्लोप हमारे पास क्या होता है? स्लोप इज rise by run. So rise mean change in y-axis divided by change in x-axis. मीन आपके पास जो rise होता है वो अलॉन्ग y-axis होता है, रन आपके पास अलॉन्ग x-axis होता है। तो स्लोप की डिफिनीशन हमारे पास ये है कि दैट इज़ rise by run. So actually in this case, if you see, the rise will be f of x plus delta x minus f of x. So that is your rise, delta y is your rise. So rise is f of x plus delta x minus f of x and the run is delta x. आपने यहाँ जो चेंज लेके आए हैं वो आपके पास है डेल्टा एक्स। तो अगर आप इस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स को देख लें, ये हमारे पास स्लोप है और ये स्लोप असल में होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन ये किस लाइन का स्लोप है? ये सीकेंट लाइन का स्लोप है। सीकेंट लाइन वो लाइन होता है जो हमारे पास कर्व की 2 पॉइंट से पास हो जाए, तो वो कहलाता है सीकेंट लाइन। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट the slope of a secant line is the average rate of change which always gives the approximate rate of change in the phenomena. So the conclusion is the slope of a secant line is the average rate of change which always gives the approximate rate of change in the phenomena. तो हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो सीकेंट लाइन का स्लोप होता है जो हमें फिनोमेना में अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज देता है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, दैट इज़ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज which is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, and that is the slope of a secant line. The point P coordinates is x, f of x, and the point Q coordinates is x plus delta x, f of x plus delta x. तो ये आपके पास x1 y1 that is x2 y2। तो स्लोप असल में होता है ना y2 minus y1, that is change in dependent variable divided by the change in independent variable. So that is the slope of that is the definition of the average rate of change. So the definition will become the average rate of change y per unit change in x is given by this delta y by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, and the slope of a secant line is the average rate of change which measures always the approximate rate of change in the phenomena. तो जहाँ पे भी आप एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करोगे ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, दैट इज़ द रिलेशन फॉर द एवरेज रेट ऑफ चेंज।
सो एवरेज रेट ऑफ चेंज इज़ एक्चुअली द स्लोप ऑफ अ सीकेंट लाइन, जो हमेशा हमारे पास फिनोमेना के अंदर अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर देता है. So that is all about the average rate of change. Inshallah, in next video we will discuss the instantaneous rate of change, which is the slope of a tangent line, and that is called derivative, which always gives the exact rate of change in the phenomena. Thank you.